Mahadev dosto, and thanks for coming to this page and clicking this IGTV. And this video would be a walk-in guide to the supplement whey protein. And whey protein is a kind of topic which is still looked up as a taboo in India and been associated with something not natural or even associated with steroids at a time. So we would be breaking all those myths and see how you can use this supplement as your day-to-day fitness goals. So what is actually whey protein? Whey protein is something जो हमारे फ्रिज में अभी है या टू बी प्रिसाइज आपके किचन में भी होगा. इफ़ यू गो एंड लुक इन योर किचन, आपके घर में ऑब्वियसली दूध होगा एंड वो दूध 80% केसिन प्रोटीन से बनता है एंड 20% वे प्रोटीन से. केसिन इज़ बेसिकली स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन एंड वे इज़ फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन. केसिन के बारे में कभी और बात करेंगे, बट वॉट आर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट इज़ राइट नाउ इज़ वे प्रोटीन. सो लेट्स एम्फेसाइज ऑन दैट. सो जब हम दूध से पनीर बना रहे होते हैं तो कुछ लिक्विड फॉर्म में रह जाता है एंड वही जो कुछ लिक्विड फॉर्म में रह जाता है उसी को वे प्रोटीन कहते हैं. आफ्टर बीइंग नो डाउट विद सब प्रॉपर प्रोसेसिंग, ऐसे रॉ is not good for body, like not raw whey protein but that raw liquid is not good for your health. सो उसी के प्रोसेसिंग के बाद हमें वे प्रोटीन मिलता है. अब वे प्रोटीन की बात करें तो ये आता तो दूध से है, तो ऑब्वियसली दिस इज़ टोटली 100% नेचुरल, 100% वेजिटेरियन, दो नॉट वीगन बिकॉज एनिमल बाई प्रोडक्ट है. सो दैट्स वॉट वे प्रोटीन इज़. अब वे प्रोटीन समझ तो गए कि आ कहाँ से रहा है. अब बात करते हैं इसकी ज़रूरत क्या है. वॉट इज़ द एक्चुअल नीड ऑफ वे प्रोटीन. सो वे प्रोटीन का कोई स्पेसिफिकली नीड नहीं है कि आपको वे प्रोटीन पे ही डिपेंड रहना है. वे प्रोटीन इज़ दी ओनली इज़ काइंड ऑफ टूल बट नॉट अ नेसेसिटी. Now, when I say it's a tool, what I mean is that whey protein helps us to hit our daily need of protein intake. Now, when I say daily need, what I refer to say is that let us say your weight is 70 kgs. So you would need at least 140 gram protein, which is twice of your body weight. You would need 140 gram of protein to actually gain muscle or to repair those micro tears after a hypertrophy session, to actually see any improvement in your body, whether you say it's lean muscle mass or gaining weight or just maintaining your lean muscle mass. So इतना तो नीड आपकी बॉडी को है ही है इफ़ यू आर इन एथलेटिक काइंड ऑफ थिंग्स, कि आप अपने माइक्रो टीयर्स को रिप्लेनिश कर सकें विथ प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स. तो 140 ग्राम प्रोटीन, उससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं, एटलीस्ट ट्वाइस तो लेना ही चाहिए. व्हाट आई प्रेफर इज़ 2.2 पर केजी ऑफ आवर बॉडी वेट. सो एज लॉन्ग एज आप इतना ग्राम प्रोटीन अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, यू आर गुड टू गो फॉर योर गोल्स. नाउ अब ये प्रोटीन गोल कंप्लीट करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क. इट वुड बी एन ईजी टास्क फॉर अ पर्सन ऑफ लो बॉडी वेट, से 60 or 65, but for me personally I weigh around 85 kgs if I'm not cutting down. So for an 85 kg person I would need somewhat like at least 170 gram of protein. That much of protein by real food may be a hectic task if you are vegetarian, but for a non-vegetarian I don't think that it's too much to aim for. Now let us say I need 160 gram of protein, and considering you are a non-vegetarian, then first thing first, you could have like 400 gram of chicken breast in two settings, like 200 gram in one session and 200 gram in another session. So we have 30 gram of protein in 100 gram of chicken breast, so that would go to 13 to 4 120. So we are pretty close to 160 or 170. Now you could throw in some eggs, let us say 4 eggs. The one egg contains 6 gram of protein, so 24 gram of protein. So 24 plus 120, 144 plus 1 glass of milk, which is 6 gram of 6 gram of protein, 9 gram of protein in 1 glass of milk. So that's almost 150 gram. And by oats and chapatis, rice, they too have some amino chains, but not complete, but they would be complete when you combine them together. So it's easy to hit. Now considering you are just an vegetarian, you would require heck load of eggs, right? And considering you are a vegetarian, now it gets more and more tough as we decrease our type of diet, right? So that's the issue with our usual diet, and especially at this time of life where we are not allowed to have eggs or chicken in our home in day-to-day life, or let us say
we are not able to eat because our appetite is low, but we need to hit that protein goals. So that's where the magic of whey protein kicks in. आपको कुछ इशू नहीं है, आप गए किचन में एक स्कूप वे प्रोटीन डाला एंड बैंग, you have 25 gram of protein. So that's the beauty of it, and that's why it's not a necessity but a tool. So summarizing up, if you need, the only reason you need whey protein is just to hit your daily protein needs, in case you are not able to do it with real food. If you are able to hit in with your real food, then there's no absolute need of whey protein. So there's a old time myth which has been circulating for so long in fitness industry, is that whey protein का actual need इसलिए होता था because of its high digestibility and which helps in post anabolic window. Now what post anabolic window means is that 30 to 45 minutes after your workout has been completed. तो पहले की रिसर्च ने ये शो किया था कि एज लॉन्ग एज आप अपना प्रोटीन हाई डाइजेस्टेबल प्रोटीन और कोई सिंपल कार्ब लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं एंड रिप्लेनिश कर रहे हैं अपने न्यूट्रिएंट्स को, तो ही वर्कआउट का मतलब है. एल्स योर वर्कआउट गोज इन वेन अगर आप विद इन 30 to 45 मिनट प्रोटीन और सिंपल कार्ब नहीं ले रहे हैं. बट अर्लियर रिसर्च ने इसको इस के प्रूव करने का ये एक फॉल्ट रह गया था कि उन क्लाइंट्स को उन्होंने उनकी डेली नीड्स नहीं दी थी. लाइक जो दो ग्रुप कंपेयर किए थे उसमें एक की डेली नीड पूरी ही नहीं हो रही थी, इसलिए मसल प्रोटीन सिंथेसिस कम था. बट अर्लियर रिसर्च हैज़ शोन दैट those research were fault, and in Journal of Sports Medicine a brief review of critical processes in exercise induced muscular hypertrophy showed that within 48 hours, as long as आप खा रहे हैं, उन रिप्लेनिश कर रहे हैं और आपकी डेली प्रोटीन नीड पूरी हो रही है, देन इट बेयरली मैटर्स कि वो किसके वजह से आ रही है, वो वे के वजह से आ रही है या रियल फूड की वजह से आ रही है. ऑल इट मैटर्स इज आपका डेली नीड पूरा हो. सो दैट प्रिटी मच ब्रेक्स अप द myth and shows that as long as you are able to hit your day-to-day goals, you are good to go and you barely need whey protein. And again, that proves it's merely a tool and not a necessity. Now let us compare कि whether it is actually cost efficient या इंडस्ट्री हमें बेवकूफ़ बना रही है. वेल एट मोस्ट लेवल इंडस्ट्री हमें बेवकूफ़ बनाती है बिकॉज वो ओवर चार्ज करती है कुछ सप्लीमेंट्स के. सो आई वुड सजेस्ट एज लॉन्ग एज 1 kg ऑफ वे प्रोटीन कॉस्ट 2200 और लेस देन दैट, you should go for it. Anywhere around more than 2300 would be way too much for paying that. So that's one of kind of thumb rule which you can follow. But considering कि क्योंकि आज के ज़माने में लोग भी समझदार हो रहे हैं एंड सब इंडस्ट्री भी समझ रही है कस्टमर की नीड्स, so you could get any raw whey protein, and raw whey protein is equally good unless and until you don't have any issues. So as long as you are having a whey protein, let us say for standard rate a 2000 rupees whey protein, which means 2000 rupees per serving, like 30 serving, which roughs up upon 1 kg, right? So that would cost around 66 rupees per serving. Now in that 66 rupees you are getting approx 25 gram of protein, right? In 66 rupees you are getting 25 gram of protein. Now let us consider egg whites, which is almost the closest thing to our whey protein, almost, not exactly. So because its PDCAA is almost 1. So when you compare egg whites with whey protein, and you would need at least 8 whole eggs, which roughly means 6 rupees per egg, and that would be 48 rupees. So when you say 48 rupees and you buy 8 eggs and उनका आप egg white निकालते हो, तो that would eventually mean 8 into 3, because one egg white means 3 gram of protein. So 3 is 24. So 24 gram of protein in almost 48 rupees if you consider 6 rupees per egg. So that's 48 rupees. You get 24 gram of protein, and whey protein is almost 66 rupees. 25 gram of protein. So we see that it's almost as cost efficient. But then again आप उन 8 अंडे का योग हटा रहे हो, so it's not actually good because योग में भी काफ़ी nutrients होते हैं. So we can say that whey protein is not that cost efficient, but because we have less than 2000 whey protein also. But the thing is that वो जो आप 66 rupees में ले रहे हो whey protein, उसकी कैलोरी का भी कुछ सीन होता है. It's merely 100 calories, but going for 8
eggs. It's more than 200 calories if I'm not wrong, but कुछ and it's definitely time efficient whey protein because इतना झोल नहीं रहता है बनाने के लिए. And कुछ लोग के लिए since समय ही पैसा होता है, so it may be subjective to a person that it is cost efficient as well as time efficient. Now most people ask me कि कौन सा वे प्रोटीन लो, कौन सा वे प्रोटीन लो, कौन सा सही है, कौन सा गलत है. टॉकिंग अबाउट इट, सारे वे प्रोटीन सही होते हैं, बट देन द इशू ऑफ ऑथेंटिसिटी अराइज. एज लॉन्ग एज आपको 30 ग्राम में मोर देन 20 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, देन इट्स गुड. द अदर थिंग इज़ दैट आप ज़्यादा हाई ब्रांड के पीछे मत जाओ, लाइक ऑन के पीछे नहीं जाना चाहिए, बिकॉज हायर द ब्रांड इज़ हायर द चांस ऑफ इट्स ऑथेंटिसिटी बीइंग मेस्ड अप, बिकॉज जितनी वो बाहर से आती है उतना ज़्यादा थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो, एंड जितनी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी उतना ज़्यादा ऑथेंटिसिटी के साथ गड़बड़ होने का इशू अराइज हो सकता है. सो आई वुड से आइदर गो फॉर अ कंपनी विच इज़ इंडिया बेस्ड, एंड उसका लैब रिपोर्ट आप चेक कर सकते हैं. कुछ यूट्यूबर्स करते हैं रहते हैं तो आप उनको देख सकते हो, अनलेस अंटिल दे आर नॉट पेड टू डू इट. तो any company which is Indian based is good. Still, if you want to go for foreign based, you can go for Nutra Bay पे रहते हैं certifications, but still कितने सही हैं कितने गलत, I am no one to question it or prove it wrong, but still one of my choice is My Protein because उसका इंडिया में lab laboratory and factory है, एंड दी अदर इज़ हिमालय किस्टा वे प्रोटीन. उसका प्रोटीन कंटेंट थोड़ा कम है, बट एटलीस्ट जो है वो ऑथेंटिकेट है, बिकॉज इतनी बड़ी कंपनी वोंट टेक रिस्क. सो दैट्स इट. एंड लास्ट सेक्शन इन्वॉल्व्स द मिथ अराउंड वे प्रोटीन. फर्स्ट मिथ इज़ दैट कि बिना वे प्रोटीन के बॉडी नहीं बनती. इट्स टोटली रॉन्ग. वी हैव प्रूव्ड इट कि बाई रियल फूड यू कैन हिट योर गोल्स. फॉर इवन अ वेजिटेरियन, अगर आप 100 ग्राम सोया चंक्स ले रहे हो तो 50 ग्राम प्रोटीन आ रहा है, राइट. सो दैट्स वन ऑफ द गुड थिंग. एंड नो, सोया डजेंट क्रिएट एस्ट्रोजन. इसकी भी कुछ रिपोर्ट्स हैं, बट आई वुड मेंशन इट इन सम अदर वीडियोज़. The other thing is that having too much of whey protein causes kidney damage. Well, it's kind of myth which I believed once, but more the clarity of research paper increased, मेरे को समझ आया ऐसा issue नहीं होता. So one of a recent work is in Journal of Nutrition and Metabolism, and it's titled as a high protein diet has no harmful effects, a 1-year crossover study in resistant trained males. इसमें क्या हुआ, उन्होंने कुछ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने वाले लोगों को पकड़ा, ऑलमोस्ट आई गेस 21 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड उनको 3 ग्राम पर केजी वेट प्रोटीन फेड किया, विच मीन्स मैंने 2 से 2.2 बोला, बट उन्होंने 3 ग्राम पर बॉडी वेट प्रोटीन फेड किया, एंड उसका कोई इशू नहीं हुआ किडनी के साथ. सो वी कैन सेफली थ्रो दैट मिथ आउट ऑफ आवर मेंटेलिटी. एंड अब ये मैं नहीं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि 3 ग्राम लो, बिकॉज फिर उतना पैसा लगाने का कोई मतलब नहीं है. एज लॉन्ग एज यू आर 2.2 ग्राम पर बॉडी वेट, यू आर गुड टू गो. So that's all, pretty much all about whey protein. If you feel I missed anything, do mention it in comment section. If you have more query, comment it down and share it with your friends who have dilemmas of going for whey protein or any other fitness related query. So feel free to share this IGTV. Take care, stay safe, Mahadev.